start with $400 and you can earn up to $4,000 as a captain. Merchant Navy में there are lot of I would say गलत institutes हैं जो कि training करवाते हैं. Sometimes they don't even get the certificate. So normally 2-3 ships आपको दिए जाते हैं. So आपको 18 months ship को पूरे करने हैं. So they will send you on ship probably in 2 or 3 ships you will complete your sea time. 5 साल के अंदर आप first officer level पे आने के लिए ready हो. But now is the time when you need to go for examination. One more set of examinations. आपने शायद भारत मूवी देखी होगी जिसमें सलमान खान was employed for some time in the merchant navy. या if you're an English movie fan, you might have seen Captain Phillips, जिसमें Tom Hanks was the captain of the ship that got taken over by the pirates. Now, what exactly is the merchant navy? How do you go to the merchant navy if you're an Indian? What is the work responsibility of officers at different steps of the ladder? What is the line of progression? What is the salary prospect that you can look forward to? आप पढ़ाई कैसे करते हो merchant navy के लिए? And what are the exams that you need to pass? And importantly, what are the frauds involved in this process जो कि आपको avoid करने हैं? These are just some of the topics जो Captain Prateek Ghai, who is now a professor who retired from the merchant navy as a captain, obviously, he told us about in the podcast. And this is just part 1 of the podcast. This is a half of the podcast. We'll release it in some time, the other part, and we hope you enjoy it. And if you have any feedback for us, do let us know in the comments below. Thank you so much, Prateek sir, for coming in and giving us time. Of course, we'll be talking about merchant navy and your experience with the merchant navy today mainly. But for our audience, we would like to start with what's your journey been like? How did you get into this field? How did you get to know about this field? From wherever you want to start, if it's childhood, it's childhood. Okay. Thanks, Amit, and thanks, Kashyap. Thanks a lot, first of all, choosing me to be on your show. And I will keep it mix Hindi and English so that we can cater to a bigger audience and सब लोगों को समझ आए. थोड़ा सा English डाल देंगे, थोड़ा सा Hindi. We'll try to make it fun. So, starting off my career, basically, I have cleared my 12th standard in 2000, and that is the same time I entered into this career after 12th. So honestly speaking, those days and that age, I had no clue about this career. It came in a very sudden way, and looking at the money prospects, I joined this career. So basically, let me tell you first from where I'm coming. I born and brought up in Agra, and Agra में पले बड़े, and schooling भी वहीं पे था. And then I remember the day I came to know about this career is from Hindustan Times. So I used to have Hindustan Times on the subscription, and उसमें एक HT career करके section आता था on I think Thursday or Friday. So उसमें there was a big article about the merchant navy. The only thing I remember now is one is the seasickness, and the other part is you start with $400 and you can earn up to $4,000 as a captain. So considering those days, तब इंडिया में BPOs वगैरह भी नहीं आए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं था, तो जॉब ऑप्शंस आर वेरी वेरी लिमिटेड, एंड फाइनेंशियली वी वर ओके, नॉट सो वेल टू डू, बट ऑफ कोर्स नॉट सो बैड एज वेल. सो एक मनी प्रोस्पेक्ट सबको अच्छा लगता है, तो $400 to $4,000 वो लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी. बट देन उसके बाद 12th की प्रिपरेशन वगैरह में चले गए. IIT वगैरह इट वॉज नेवर माई फोटे कि उसमें जाना है इस तरह के इंजीनियरिंग वगैरह. सो आई नेवर वेंट फॉर इट. ऑफ कोर्स आई एम मोर इनटू ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग. सो निफ्ट और NID का एग्जाम मैंने 12th में दिया था. आई वांट टू परस्यू ईदर आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनिंग. So meanwhile, suddenly my father came to know about one agent who do the admission stuff etc. Okay. So उसके थ्रू थोड़ा नॉलेज मिला, तो I thought कि okay, let's find out more about it, how to go in this field and career. तो अब वो प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट ओवर हियर, बिकॉज मुझे क्यों नहीं था कि मर्चेंट नेवी में अभी जाना है, तो अभी किस तरह की लाइफ है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ. तो आई वेंट टू few people who have been into merchant navy, और कुछ लोग नेवी में थे, इंडियन डिफेंस, उनसे भी बात की just to get a perspective कि what is all about being in merchant navy. तो ठीक लगा सब कुछ. Then I entered into the career, I did my training, and you know. Sir, how long was the training for merchant navy? So those days it used to be for 6 months. Now it is for 1 year. So basically shipping में क्या होता है, you get a basic training,
and that is for 6 months nowadays, 1 year. So there are multiple ways to actually go in the merchant navy. I will go about it. Understood. So once you enter, doing your basic training and some certification courses for safety, fire prevention, medical, then the company will send you on board the ship. You have to complete the minimum required time period for giving your competency exam. So basically, once you go for your competency exam, it is again you have to attend a college for 4 to 6 months. You prepare all the subjects, you give the examination, then there will be government examinations. So you have to clear the college examination first, then government examination and government orals. Then you will get a license, which we call it as competency certificate, COC, certificate of competency. So it's basically like a passport kind of a book. It's a license, like how pilots get license. We get license for navigation. Okay. So then you need to go for the first officer and then finally exam of captain. So 3 stages you need to clear to become a captain in merchant. Understood. Understood. So, sir, like, are there any educational requirements or qualifications? Like, you need to complete your 12th or something like that. Like, what is the baseline level to go and have an entry level job in this profile? And Okay. what are the like exams में is it maths based science क्या पूछा भी जाता है in the Okay, so I'll tell you. yeah. There are, as far as I know, I'm not into recruitment, but as to the best of my knowledge, there are 3 ways to go. One is the tough side, one is the normal side. Hmm. So one thing is that you need to have physics, chemistry, maths in 12th standard. Okay, Okay. you need to have minimum 60-65%. But of course, the good companies, they always look for 90s and 95, because it's always competition is always there. Hmm. But that doesn't mean with less marks you will not clear the interview. You can still try. But before I tell you about the process to go inside the merchant navy, Hmm. let me warn everyone. Just like air hostess, they do the training and then these girls are looking for a job and they are not getting it. So all that money goes into drain. Similarly, merchant navy mein, there are a lot of I would say गलत इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ट्रेनिंग करवाते हैं. Sometimes they don't even get the certificate, और लालच दे के दिल से okay we will give you the ship also. I remember one of the case from Rishikesh. So one of my uncle's maid, उनका बेटा, he paid 2.5 lakh rupees ट्रेनिंग के लिए. Hmm. उसको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी इशू नहीं हुआ. उसके बाद कुछ कैनुअल कोर्सेज करवा दिए लखनऊ में. उसके बाद उसको बोला शिप देंगे. शिप देने के लिए अलग से 1.4 लाख लिए, और उसको शिप देने की जगह उसको टर्की में, आई थिंक, या टर्की में किसी टग बोट पे. सो देर आर स्मॉल पावरफुल बोट्स, दोज हु पुल द शिप्स व्हेन दे आर बर्थिंग इन द पोर्ट. पोर्ट पे आते हैं अलोंग Okay. साइड आपका शिप. तो 2 शिप आपने टाइटैनिक मूवी में देखा होगा. उस तरह के एक टग बोट के ऊपर उसको नौकरी पे डाल दिया. 6 महीने तक उसने काम किया, उसको कोई सैलरी नहीं मिली. जब भी वो बोलते तो बोलते आपका सैलरी आपके एजेंट के पास जाएगा. फाइनली ही कॉन्टेक्टेड ITF, International Transport Federation. So it's a international union who help the seafarers if they are in trouble. तो इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से और ITF की हेल्प से वो इंडिया वापस आया. तो ही स्पेंड ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 लाख रुपीज, Wow. एंड ही वर्क फॉर 6-7 months with zero salary, and now he's a दिहाड़ी मजदूर and he's working. ट्रेनिंग किया, पैसा दिया, बट ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ जेन्युइन नहीं है. तो इस तरह की चीज़ों से सबको बचना चाहिए. हाँ. चाहे आपको कैडेट में भेज रहा है, रेटिंग में भेज रहा है, किसी भी करियर में भेज रहा है. बेस्ट थिंग इज फाइंड आउट द प्रॉपर चैनल टू गो इन अ पर्टिकुलर करियर. तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि मर्चेंट नेवी में हमेशा किसी अच्छी कंपनी का पहले इंटरव्यू क्लियर करो. गेट अ लेटर ऑफ गारंटी दैट दे आर गोइंग टू मर्ज यू इन देयर कंपनी. Okay, Okay. so good companies always do that. They will keep a written examination somewhere. They will put advertisement for it. They go to colleges. So like my company, we go to different colleges all around India, and we do the counseling for the students. We tell them the right way, Hmm. and we tell them how you can go about it. So जब भी written examinations होते हैं, all these people come, they clear the written examination, then they will be called for the interview.
And once the interview is done, then it's a guarantee that you are through, because of course there will be email communication and some documentation. भाई आपका अब पास हो गए हो, हम्म हमारी कंपनी आपको लेगी, या सिमिलरली अदर ऑल गुड कंपनीज डू लाइक दैट, एंड वो कंपनीज आपको लेंगी। अब आप जाइए और ये मैंडेटरी ट्रेनिंग करके आ जाइए। गुड कंपनीज नॉर्मली विल टेल यू, लाइक आवर कंपनी, वी हैव आवर ओन ट्रेनिंग सेंटर in Kazat. So we do training over there. So of course it's a mandatory course, so it's not company sponsored. Anything which is required by the government, by the requirements, it always need to be paid. Something value added in house, that normally all these big shipping companies they pay for it. So फिर उसके बाद कोई भी स्टूडेंट है वो जाएगा अपना यहाँ कॉलेज पूरा करेगा 1 ईयर का, उसमें उसको सारे बेसिक ट्रेनिंग प्लस हम्म एजुकेशन रिलेटेड टू शिपिंग, वो सब चीज़ें लाइक सेलेस्टियल नेविगेशन, प्रैक्टिकल नेविगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ द वेसल, एंड सम थ्योरी, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू शिपिंग इंडस्ट्री। वो सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, मेट्रोलॉजी हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स उसको पढ़ाए जाएंगे। मिड टर्म होगा, फाइनल होगा, वंस। सो बेसिकली दीज कॉलेजेस prepare you to go on ship, not for completely navigation, basically just हम्म so that at least आप ship पे जाके ट्रेनिंग लेने लायक हो। So basically Okay. this is part of the shore side training। हाँ उसके बाद फिर कंपनी आपको अलॉट करता है शिप। सो अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। सो नॉर्मली 2-3 शिप्स आपको दिए जाते हैं। सो आपको 18 मंथ शिप पे पूरे करने हैं। So they will send you on ship, probably in 2 or 3 ships you will complete your sea time, we call it sea time। शिप पे ओके 18 मंथ्स होना चाहिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो हम्म एग्जामिनेशन देने के लिए। नाउ कंपनीज ट्राई कि आपको डिफरेंट तरीके की शिप दिए जाए। सो बल्क कैरियर्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स होते हैं, गैस कैरियर, कार कैरियर्स। सो उस कंपनी के पास जो भी अवेलेबल शिप्स हैं, दे विल ट्राई टू गिव यू डिफरेंट शिप्स, ताकि आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मिले। फिर उसके साथ आपकी एक रिकॉर्ड बुक है, वी हैव अ डिजिटल वन, तो उसमें आपके टास्क दिए रहेंगे, हम्म वो आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। शिप पे सीखना है, सीनियर से पूछना है। वंस इट इज डन, यू हैव टू टेक द शिप बोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर विच इज फर्स्ट ऑफिसर, उसके सिग्नेचर लेने हैं। वन दीज टास्क आर डन, यू विल कम टू द कंपनी अगेन, एंड जो कंपनी ट्रेनिंग ऑफिसर है उसको दिखा के यू विल गेट द क्लियरेंस। and you will एंड then do 6 months of training for that you said guarantee competence वाला जो ये है इसके या बाद तो उसके यस यस यस, तो वो आप 18 मंथ बेसिकली जब आपके ऑन पेपर हो गए, 18 हाँ मंथ्स अगर रिक्वायरमेंट है तो नॉट इवन अ सिंगल डे लेस। ओके Okay. ठीक है ना? तो इट्स गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, ओके, इट्स इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स, ओके। सो बेस्ड ऑन दैट यू कंप्लीट दिस टाइम, देन यू आर एलिजिबल, वंस यू आर पास एंड एवरीथिंग, देन यू आर एलिजिबल टू एक्चुअली गो फॉर द कॉलेज एंड डू योर एग्जाम्स। फिर आप कॉलेज कोई भी चूज कर सकते हो आप, उसी कंपनी का अगर है, वरना प्राइवेट है इंडिया के अंदर, तो उसमें 6 मंथ्स की क्लासेस रहती हैं, जिसमें यही सारे सब्जेक्ट्स मैंने पहले बताए थे, मेट्रोलॉजी, स्टेबिलिटी वगैरह। इसके बारे में राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपको दोबारा से स्क्रैच से सब चीज़ दोबारा से पढ़ाई जाएंगी। And then you have to appear for your exams. If you are pass, then you are ready for giving the exam for Director General of Shipping, DG Shipping examinations. You will book your seat with all the documentation, of course, ready. You will go for that exam, and once you clear uh, those exams, so then you are eligible for oral examination. Okay. Okay. wow so many exams sir ये तो या ऑफ कोर्स। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि इस करियर में पढ़ाई नहीं करनी, बस हाँ पैसा पैसा है, डॉलर ही डॉलर है, फॉरेन कंट्रीज घूमने को मिलेगा, तो गाइस बी अवेयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? ओके लाइफ में मर्चेंट नेवी हो या कहीं भी हो, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू लर्न। Right. सर एंड एट दिस पॉइंट मतलब ये प्रोसेस क्योंकि इतना लंबा है हम्म। एट व्हाट पॉइंट इज द गाय श्योर कि यार मैं मर्चेंट नेवी तो बन सकता हूँ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 2 साल दे दिए एंड फिर रियलाइज हुआ ओके आई फेल्ड एन एग्जाम लाइक इज देयर एनी गारंटी कि मैं मर्चेंट नेवी में मेरे को एक जॉब मिलेगी फाइनली ओके। सो आफ्टर ऑल दिस I will go about the methods later on. हाँ Okay, let me just answer that first, and then I'll come to your question. या So like I told you in the beginning, there are three ways to do. Uh, See, जैसे आप आर्मी में जाते हो या पुलिस में जाते हो, तो पुलिस में आप एसपी वगैरह के थ्रू भी धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर आईपीएस बन सकते हो, बट उसमें बहुत साल लग जाएंगे, बहुत सारे। या फिर आप सीधा यूपीएससी क्लियर करो, सो यू विल बी डायरेक्टली आईपीएस, राइट? तो Right. सिमिलरली मर्चेंट नेवी में एक तरीका है कि अगर कोई 10th पास है केवल, पीसीएम भी नहीं है उसके पास, वो शिप पे एज अ रेटिंग ज्वाइन करेगा। बेसिकली यू नीड टू डू द चिपिंग, पेंटिंग, ऑल दीज ब्लू कॉलर जॉब्स, ओके। एंड वेयर एज अगर आपने पीसीएम है आपके पास, तो आप
कंपनी के सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू जो जाते हो, उसमें आप सीधा आई वुड से व्हाइट कॉलर जॉब, बट आप ट्रेनिंग भी ले रहे हो और वो सारे काम जो दूसरा इंसान कर रहा है वो भी आप भी कर रहे हो, बिकॉज आपको सब कुछ सीखना है, बट तरीका फर्क है। आपको डेलिबरेटली टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए। He is not there for studies basically. He's not a cadet. He will join as a rating. And this guy is joining as a cadet. So he will be getting the task from the company, he will get the time period, and that guy need to complete 36 months. And then he can go for examination. This guy can do 18 months and also the task provided to him, and then he can go for the exams. There is also a third route. A lot of people do nautical science degree. Okay. So for proper 3 years, they do a proper degree of nautical science. Then they need to complete only 12 months on board the ship. But I Alright. just suggest the best way would be the middle one, going as a cadet, because आप nautical science में 3 साल theory पढ़ रहे हो, but shipping experience, practical experience in hand is more important. So 18 months Hona, that experience will be better compared to going for nautical science. But anyway, all three ways are there. It's up to the person. अगर किसी से गलती हो गई, नहीं मार्क्स आए हैं, ठीक है, लेकिन वो बाद में मेहनत करना चाहेगा. Like lot of people have seen 12th fail, right? ठीक है, Correct. ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते. तो आप हाँ. 11th से स्टार्ट कर सकते हो. आपने 10th पास हो, आप एज अ रेटिंग स्टार्ट करो, बट अगेन गो थ्रू द कंपनी प्रोसीजर. डोंट गो फॉर दीज चीट काइंड ऑफ एजेंट्स जो आपको पैसा ले लेंगे, आपको देंगे नहीं देंगे, नोबडी नोज. हमेशा कंपनी के थ्रू होना चाहिए सब कुछ, डायरेक्टली नहीं होना चाहिए. आपका पैसा बर्बाद चला जाएगा. नाउ आई कम टू द पॉइंट यू सेड कि कब पता चलेगा कि गारंटी है कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप 12th में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और आप पास हो पाए हो आराम से, एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो मर्चेंट नेवी की एजुकेशन इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल बेस्ड. ठीक है, तो उसमें आप आराम से पास हो जाओगे, प्रोवाइडेड यू आर डिसिप्लिन्ड एंड you want to study. So hard work is the Yeah, I've biggest seen people who have done who have got 90% in 12th, okay, and they fail the you know these exams, simple examinations what we conduct. Why? Because they are not serious. अभी आजकल थोड़ा सा एक, because multiple options आ गए हैं, so people are little busy कि मैं podcast बना लूंगा. आजकल हर को लगता है मैं स्टॉक मार्केट कर लूंगा. तो थोड़ा सा स्टॉक ऊपर गया तो उसको लगता है यार यही जिंदगी है यार, मैंने एक दिन में 10,000 कमा लिए, महीने का 3 लाख हो गया, 36 lakhs तो मैं यही कमा लेता हूँ. नॉट सीइंग द एंटायर साइकिल. तो अभी Correct. मल्टीपल ऑप्शन की वजह से पीपल आर नॉट दैट मच फोकस्ड. बट अगर स्कूल में एवरेज स्टूडेंट भी अगर आप हो, आप आराम से एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट. वंस यू क्लियर योर एग्जामिनेशंस, देन यू बिकम ऑफिसर एंड यू स्टार्ट योर करियर बेसिकली. एंड कैडेटशिप में भी आपको मिलता है. इफ यू गो एज अ रेटिंग यू गेट सम सैलरी. इफ यू गो एज अ कैडेट, so depending upon company to company, 300, 400, $500 they give you per month, which is just a stipend. You are not an officer, you are just a cadet, you are just a trainee. So you are getting stipend, and if you behave well, you study well, then you give examination, and the first officer salary you get roughly around, mm, nowadays demand and supply. Some people are giving $1,500 also for first class shift as an officer, but roughly 2,000, 3,000 usually you get of 1 month. Wow. Okay. Okay, But this. it's a contractual job. Please be reminded. So till the time you are on ship, you get this money. Once you are back home, you get nothing. Understood. And your insurance covers till the time period you have given on ship. So roughly companies do like this. If you are 6 months on ship, roughly 3 to 4 months your insurance will be covered, and they will call you again, of course, because the entire structure of most of the companies work like this. So although you are not part of their contract, but still you are part of that company. So they will keep calling you, and you join again. You want to join early, you want more money, you want to become officer very quickly. You join after 15 days. You join after 1 month also. Not a problem. So this is actually really helpful. मतलब जो भी अगर मर्चेंट नेवी में आना चाहता है, I think this serves as a really good guide. Especially वो बात की like ये जो scams हो रहे हैं, be very careful about ये it. And I think this 2000 से applies. हो रहे हैं, हाँ. जब मतलब उससे पहले भी होते होंगे, हाँ. मेरे टाइम से भी हो रहे हैं. And अभी भी हो रहा है सर. Like online we see so yeah, many yeah, ads. Yeah. plenty. Shortcut लेना is the problem then, Yeah. बिल्कुल. basically. Right. Um,
So Kashyap, I think. so thank you, Pradeep sir, for giving a very comprehensive overview on how to get in and how it progresses in your career perspective as well. So just a small question to ask in summary of all of this. So how long from end to end, like from qualifying my 12th standard exams until I get my first officer job on the ship, how long is that period if I go the second way that you mentioned, like the most followed way? So Yeah. why just tell only for the first officer? I mean, Okay. first Yeah. level Yeah. officer. Yes. Yes. Might as well. I will tell you The because whole career. ultimate goal of everyone should be becoming a captain or chief engineer. Hmm. By the way, I have not told the other part also. So there are three areas where someone can work on ship. So because I am a captain, so I was more focused on that. Let me tell you about the other part also. So there are engineering side as well, Hmm. which is equally important for the vessel to run. So we have two streams basically going. The third one is of course catering, so only cook and steward. So three areas: one is deck, one is engine, one is kitchen or galley department. Hmm. So galley department we have ratings, so you don't have to give any competency exams etc. for that. So a cook and steward. Whereas similarly to deck side, you also have engine room where you need to do marine engineering. Then you go and give your exams, and finally you become fourth engineer, third engineer, second engineer and first engineer. फर्स्ट इंजीनियर को हम लोग चीफ इंजीनियर भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बड़ा साहब. Hmm. एंड सिमिलरली डेक पे वी हैव कैडेट, देन थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, फर्स्ट ऑफिसर एंड देन कैप्टन. Okay, so that is the career progression also basically. दैट्स करेक्ट. एंड जो दूसरा एरिया है रेटिंग्स का है. सो रेटिंग्स में वी हैव, यू स्टार्ट एज अ trainee seaman, deck trainee seaman on the deck, and then you become ordinary seaman, able seaman, and boatswain, bosun. So basically उन लोगों को आउट से जैसे सिक्योरिटी देखना हो गया शिप Hmm. का चिपिंग, पेंटिंग, स्वीपिंग, टेकिंग केयर ऑफ द कार्गो. ओके, ऑफ कोर्स डिग्निफाइड जॉब, बट मोर हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड इन दैट. Sir, and what सिमिलरली does, रूम yeah. में भी रेटिंग रहता है. सो Hmm. इंजन रूम में वी हैव ऑयलर as well as a fitter. So fitter, or those who can do welding, cutting, and helping the engineers with the equipments. And एक pumpman रहता है who's required on the oil tankers. So these are few areas where people can work. Sir, and what does a day-to-day look like for you now as a captain and before in the junior roles of your career progression? Okay. Uh, So I missed out that part. कश्यप का एक बार आंसर करता हूँ, उसके हाँ बाद हाँ आप. हाँ बिल्कुल. सो कश्यप ने बोला कि आप पहला ऑफिसर कब बन सकते हो कि भाई मोटे नोट कमाना स्टार्ट हो जाए, राइट? जो सबका रहता है, पॉकेट मनी से काम नहीं चल रहा, बड़े हो गए हैं, ठीक है, Hmm. गर्लफ्रेंड्स भी बन जाएंगी तब तक, तो पैसे चाहिए. सो सी, इफ यू क्लियर योर एग्जाम्स एवरीथिंग, 1 year you need for, आई विल टेल यू मोर अबाउट द डेक, कंसिडरिंग बीइंग अ डेक गाय. इंजन रूम में अगर आपको इंजीनियर की तरह जाना है, तो यू हैव टू कंप्लीट योर इंजीनियरिंग फर्स्ट, देन यू Okay. स्टार्ट योर करियर. Whereas deck side pe, you do 1 year this college, Hmm. 1 year on the shore side, then you need at least 1.5 year on ship. Okay. Okay, 2 or 3 ships. So if you are lucky, or if you go on ship quickly, like 2.5-3 months में आप ship join कर रहे हो, तो roughly 2 साल के अंदर अंदर आप अपना ये जो ship का minimum cadet का time period है वो कर सकते हो. यानी कि 3 साल के अंदर थोड़ी बहुत छुट्टियां वगैरह, 3 से 3.5 साल में आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे. नाउ टू गो फॉर दिस एग्जामिनेशन, यू नीड टू, ऑफ कोर्स अगर आपको टाइमली बुकिंग्स वगैरह भी मिलनी चाहिए, कॉलेज में सीट है कि नहीं, 3-4 महीने वेट करना पड़ गया तो वहाँ थोड़ा सा समय लग जाता है. Right. सो अगर आपको इमेजिन ऑल गोज वेल वाली बात कर रहा हूँ. Hmm. ओके, सो इफ ऑल गोज वेल, आपको शिप से उतर रहे हो और एक बैच स्टार्ट होने वाला है, आपको सीट भी मिल गई एंड आप फर्स्ट शॉट क्लियर भी हो गए. सो दैट वे छुट्टियां मिला के आप रफली 1 साल कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन की मान लो, Hmm. तो 4 years के अंदर अंदर आपके हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी रहेगा. एंड वो सेकंड ऑफिसर का मिलता है, लेकिन आप ज्वाइन हमेशा थर्ड ऑफिसर में ही करोगे. फिर कंपनी अपने हिसाब से आपके प्रमोशन देगा सेकंड ऑफिसर के लिए, विच इज द Okay. सेकंड ऑफिसर. तो यानी कि 4 years इज द मिनिमम, कांट डू अर्लियर देन दैट. बट कोई अगर एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया, या किसी के घर में कोई कभी ऊपर नीचे हो गया, या कभी शिफ्ट लेट मिला, तो वो सब चीज़ें इशू आए तो 5 years. कोविड में बहुत परेशान हो गए थे लोग, एग्जामिनेशन बंद हो गए थे सब,
तो वहाँ पे लोगों का 1-1 2-2 साल वेस्ट हुआ था। तो या सो रफली अर्लीस्ट इज 5 years if you can say in Germany। Got it. एंड अभी अगर उसके बाद बात करें कि कैप्टन कब तक बनेंगे, अगर आप मेहनत अपनी जारी रखते हो तो और अच्छा काम करते हो, आपकी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, यू वर्क हार्ड, यू स्टडी वेल, सो नॉर्मली कंपनीज 2 या 3 शिफ्ट थर्ड ऑफिसर में, यानी कि 12 या 18 6 मंथ्स का नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है। सो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स या 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको सेकंड ऑफिसर बनाया जाता है, ओके। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप काम सीख चुके हो, और उसके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपने सीधा सेकंड ऑफिसर का क्लियर किया है। Okay. फिर Yeah. सेकंड ऑफिसर में रफली 3 शिफ्ट मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी है, काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो 18 महीने वहां पे भी चाहिए। और अगर आप अर्लीस्ट 18 मंथ्स इसका भी मान लेते हो तो 3 years ओनली ऑन शिफ्ट, 6 वेसल्स एक्चुअली। तो 6 शिफ्ट करने के लिए आपको बीच में अगर 3-3 महीने भी घर पे रुकते हो, अगर आप ज्यादा नहीं रुकते, 3 महीना रुकते हो घर पे छुट्टियों में, सो आई थिंक 15 months रफली मोर, 1.5 साल और मान लेते हैं, ठीक है, 1 साल। तो 4.5 साल के अंदर, चलो थोड़ा और महीने भी अगर ऐड कर लो, 5 साल के अंदर अंदर आप फर्स्ट ऑफिसर लेवल पे आने के लिए रेडी हो। बट नाउ इज द टाइम व्हेन यू नीड टू गो फॉर एग्जामिनेशन। One तो one more set of examinations. more salary, more promotion, more examination, Okay. okay, because your responsibility is increasing. Yeah. This stage your salary will actually become double, so Okay. आपकी सीधा डबल है। बट प्लीज डोंट लुक एट इट, आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रिमेंडसली इंक्रीज होती है, ओके। नेविगेशन ड्यूटीज आर सेम, 8 घंटा तब भी आप नेविगेशन कर रहे थे थर्ड ऑफिसर में, सेकंड ऑफिसर में भी, फर्स्ट ऑफिसर में भी। बट फर्स्ट ऑफिसर में you are taking care of the stability of the vessel, you are taking care of the cargo of the vessel, you are taking care of the maintenance of the vessel, so your planning, your understanding, handling of the people, lot of things increase in a drastic manner, and you are second in command, god forbid अगर कप्तान को कुछ हो जाता है, कैप्टन को, so first officer need to take over, so you can understand how responsible you need to be. So of course salary is getting double, but आपको एग्जामिनेशन भी क्लियर करना है उसके लिए, और आपको वो सब काम आना चाहिए, दिखाना है आपको कंपनी को, तभी आपको प्रमोशन कंपनी देगी। केवल एग्जामिनेशन करना डजंट गारंटी यू यू गेट अ प्रमोशन। Performance Okay. तो based. रफली 5 years के बाद सपोज अगर आप ये एग्जामिनेशन क्लियर करते हो 6 years, एंड उसके बाद 5 साल फर्स्ट ऑफिसर में काम करने के लिए आपको और लगते हैं, एंड उसके बाद आप कैप्टन बन सकते हैं। तो 5, 6 एंड इनिशियली जो मैंने आपको बोला था 4। So 35-40 years तक आप कैप्टन बन सकते हो basically. हाँ जी, सॉरी। 35-40 years of age तक you can become a captain. You can after 12th you are starting your career, so हाँ. 30 के आसपास आप कैप्टन बन जाते हो। Oh. Oh. So this is one career, I'm not boosting it, actually someone can lift up the entire standard of their family financially, education wise also. Don't look only on the finances, the kind of exposure you get in merchant navy is tremendous. The kind of work you are doing, lot of hard work you need to do. It's not like corporate, you're going in the morning and you're coming in the evening. You need to, give a lot of hours, and a lot of efforts need to be given. Ship is moving, rolling, pitching, bad weather, good weather, you are away from your family, you are on the internet nowadays। previously मेरे टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं था, तो आप दूर रहते हो, कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, बिकॉज हर दिन मंडे है वहाँ पे, क्योंकि शिप को डेली चलना है, ओके। सो पोर्ट में आ गए तो ये अगर किसी को गलत फहमी है कि यूएस गए तो अब घूमने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। शिप पोर्ट में आया है तो अब आपका काम ज़्यादा है, कार्गो लोडिंग, डिस्चार्जिंग, इंस्पेक्शंस होंगे वहाँ पोर्ट पे, कुछ मेंटेनेंस है, श्योर वर्कशॉप आनी है, सामान आना है, खाने का सामान आना है, तो आपका काम बढ़ता है वहाँ पे, कम नहीं होता है। तो आपका जो फ्री टाइम है उसमें आप कमरे में आराम करो या घूमने जाओ, एंड डिपेंडिंग अपॉन ऑफ कोर्स द कंट्री, जैसे कोविड में सब परमिशन बंद हो गई थी, तो इट्स टफ टफ जॉब, but very good exposure, lot of training, and lot of money, and lot of respect also. Understood.